Hey, good morning everyone. This is the day 20 of our consistency and मुझे लग रहा है कि आज डेट 1 October। सो अभी 3 महीने मतलब 90 डेज बचे एंड एवरीवन शुड ट्राई टू कंप्लीट और ट्राई टू अचीव देयर जो भी गोल था आपका वो अचीव करने के लिए आप भी अब स्टार्ट कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स इज वेरी बिग। थोड़ा थोड़ा स्मॉल चंक ऑफ लाइक आपका गोल जो भी होगा उसका छोटा छोटे पार्ट करो। वो ट्राई करो जितने में से करने का। क्या पता अच्छी हो ना हो बट प्रोसेस पे भरोसा रखो। आई थिंक प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल अचीवमेंट। तो चलो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड दिस इज bi-weekly contest 151। We are going to solve or practice and we will try our best. Okay, chalo, let's go.
what they are asking is basically we have to count number of copy subarrays or copy arrays you can create. And what is copy array? Copy array is basically copy of I minus copy of I minus 1 should be equal to जो भी array दिया है इसको अपन ARR बोले ARR का I माइनस ARR का I minus 1. So ये बोला गया है and we are given a bounds for each position, like if it is 1 2 3, like suppose we have n equals to 4 where n is size of original array, then we have given a bounds name array which is the size of n into 2, like n rows and 2 columns, and each bound defines the range of ith position, like 1 to 2, 2 to 3, and then 3 to 4 and 4 to 5. So basically a of 1 can range between 1 to 2, a of 2 can range between 2 to 3, a of 3 can range between 3 to 4, and a of 5 or a of 4 can range between 4 to 5. 4 to 5, like, and this is one base index thing I'm considering. This is a of 1, a of 2, a of 3. So that is what we are given, and what we are supposed to do is count number of copy arrays we can create, और ये वाली condition भी आ जाओ. UI is smaller than equal to copy of I is smaller than equal to VI. So basically we can choose any integer here, any integer here, any integer here, any integer here, but in this range only, but in this range only. Okay. Hmm. So we know the gap between each element will be fixed, you know. ये तो दिया हुआ है ना आपके को. So that will be fixed. एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन. व्हाट समझ करो ये सब सही है, अभी अंडरस्टैंडिंग तो सही है. अपने क्वेश्चन क्या है, लेट्स सपोज यही एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 और 4. The gap between this is 1, the gap between this is 1, the gap between this is 1. So 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Suppose करो, if I choose 1 here, so I have to choose 2 here, I have to choose 3 here, I have to choose 4 here. If I choose 2 here, I have to choose 3, I have to choose 4, and I have to choose 5 here. And that is what given, isn't it? What I am only trying to say is this gap is fixed, so we cannot change the gap. Yes. So if we can take one from this is the lower bound, one from this, what will be the lower bound for the next thing? So one. So like
like UI plus ARR, UI plus ARR, like UI प्लस डिफरेंस जो ARR का और ARR के बीच इन दोनों के बीच में होगा, so इसको डिफरेंस ऑफ वन बोलते हैं अपन ने क्या, difference on this will be UI, so this will be starting point or lower bound for next element, as simple like that, this only, VI plus difference will be upper bound. Nice. So now the upper bound and lower bound is 2 for this, so we can create a 2 and we will check the upper bound and lower bound. So we have upper bound and lower bound is this settled. Now lower bound is equal to 2, upper bound is equal to 3, and 2 plus 1 is 3, 3, then 2 to 3. So what is the value? What are the values are here? 2 to 3. Then we can only simply do lower bound and upper bound. And yes, if we can simply calculate for each upper bound, lower bound, and go to each index. Maximum of lower bound and minimum of upper bound लेना पड़ेगा. And then nice. कुछ तो solution. Maximum of upper bound लेंगे. Like upper bound को छोटा करते जाएंगे, अपर बाउंड को छोटा करते जाएंगे और लोअर बाउंड को मिनिमम करते जाएंगे, और ये जो डिफरेंस बचेगा अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में, दैट विल बी द दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर. यस, देखते हैं अभी, विल ट्राई आवर बेस्ट. So I'm thinking int n equals to ori, ओरिजिनल को ARR बोलते हैं अपन, नॉर्मल ARR of size, and bounds we know, so I think we can start, we can per bound, per bound equals to, let us suppose we are calculating it again, upper and control Z and lower BOUND is equals to. Now, what is the lower bound? Lower bound is basically, hmm, over time, same, एक बार मेरे को ट्राई रन करना पड़ेगा इधर. Let us calculate the bounds, okay, for once. Now, for this is lower bound will be 1 plus 1, 2, and 1 plus, like for this thing, 1 plus 1, 2, and 2 plus 1 will be 3. So this is okay. So 2 and 3. Now, for next thing, for this thing, what will be the upper bound and lower bound? So 2 plus 1 will be 3, and 3
plus minimum will be 4. The maximum will be 3 and minimum will be. चैट्स का सेक्शन चला गया है दोस्तों, इधर से देखो पता नहीं चल रहा। So I think I can यहीं पे सिस्टम कर सकता हूँ। Who is this? KTGFV. Bro, there is or there are no. भाई लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहा हूँ मेरे लिए, to make my thing consistent. तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, मेरे लिए मैटर नहीं करता इतना। और मैं कुछ कोई गेमर नहीं है क्योंकि वॉशिंग आनी चाहिए।
No, initial upper bound of the only. पहले अपर बाउंड को लोअर बाउंड को अपलोड करो लोअर उसमें डिफरेंस निकालो ट्राई एंड करो 15 को और कुछ पाई इसी एग्जांपल के लिए करता हूँ पहले पहले मेरे पास था 1 और 2 मैंने न्यू अपर बाउंड निकाला 1 + 1 will be 2 and 2 plus 3 plus 1 will be 4. Now minimum of this. So lower bound will be minimum of 2 is will be 2 and upper bound will be maximum of maximum of this will be 2 and minimum of this will be 3 and 4 3. So this is now 2 plus 1 will be 3 and 3 plus 1 will be 4. इन दोनों का भी lower bound is minimum of एयर क्या के साथ क्यों मिनिमम कर रहा हूँ तो मिनिमम ऑफ बाउंड्स का आए यस बाउंड्स का आए बाउंड्स का आए
कॉमा जीरो बाउंस का है कॉमा वन। ये तो कुछ तो दिख रहा है। हो गया दोस्तों, हो गया। जीरो है इसमें का चोला। और ये मैंने कैसे निकाला? जस्ट ट्राई रन करके। मैं इतना कुछ मैथमेटिकली इम्प्रूव्ड बंदा तो नहीं। ट्राई रन करते रहता हूँ जिंदगी में। भाई के भाई, एक बार जाता है ना दोस्तों, ये फिर नहीं चलता। नाइस, सेकंड हो चुका है, अच्छा लगा। What here the problem statement is, the problem statement is basically we are given array nums, like array nums. We are given some array nums and some element will be there. So we have to perform some operations until the array become fully empty. So what are these operations? First, we can choose any two elements from first three elements. Like from these three elements, we can choose like a0, a1, a2, and so on and an. So we can choose any two elements from these three elements. Like suppose we have a0, a1, a2. Now we can choose any random two elements like a0, a1, a0, a2, a1, a2. So between these three pairs, we can choose any and then delete them. Like if we choose a0, a1, we can delete them, and the score or the cost of doing this operation will be max of a0 and a1. So cost of doing this will be max of a0 and a1. Say similarly for this a0 and a2, the max of a0 and a2 will be the cost, and for this one, max of a1 and a2 will be the cost. So that is what given.
So the our end goal is to achieve or to remove all the elements, remove all the elements such that cost is minimum. Cost basically like sum of cost will be minimum. Now you can see here 6 to 8 will be the first triplet. Now we can delete any two numbers. So if we think greedily, we can take 8 and 6. We can delete, we can have a cost 8. And we can delete 4 and 2, remove to both of them, and we have a cost 4. So basically that's what they are doing. Remove 8 and then remove this, do triplet. In this same, remove 3 and 2, and we will have 3 and 2. We will have 3 in our answer. Hmm, that is problematic. Now the length is 1000. So we can think of solution kind of what is we have given a n equals to 1000. So we can think of solution kind of o square or o square root o square n square root n or n square log n. This kind of solution we can think of. And yes, and basically 1000 means we can think of dynamic programming and stuff may work. So like we have three options, you can see we have three options to read. We can create a queue, but in queue we have to push from back only. We can use DQ then. DQ, what is DQ is like 6 2 uh, 8 and 4. We will push front पॉप फ्रंट करेंगे इन तीनों को. नाइस. पॉप फ्रंट करेंगे इन तीनों को. और इन तीनों में से तीन ऑप्शन है आपके पास. what the three are, like suppose this is A, this is B, and this is C. Now the answer can be max of A comma B plus we can call solve on remaining. So basically for remaining, if we are using A and B, remaining is C. So C we have to push front, and this will be the array. This can be solved. DQ देंगे इसको, and DQ and that can be solved. Now what will be the best case? Whenever DQ dot size is smaller than or equal to 2, then we have to return the maximum of whatever it is in the deep or DQ. So that will be the best case. Now think of it. It may work, may not work. I don't give a fuck about it. But what
It is a state. Okay, but states are changing. Greedily, what we can think. Max to the always we have to add, you know. Um, let us read the next question once. Hypermutation.
Choose any three elements. What currently I'm thinking of, like just implement this ith on a logic. I will be 0 and ऐसे state रखूंगा मैं dp dp of ij will be at ith position or at ith index. I delete jth element, or I, what can I say? I keep jth element basically. Just I am deleting a and b, then I am keeping c. So c will be the, if I am deleting b and c, I am keeping a, I am deleting a and c, I am keeping b, like this. This is what I'm thinking of currently. Now a can be represented by 0, b can be represented by what? By 1, c can be represented by 2. पर वो स्टेट मेंटेन कैसे करूंगा मैं? ये सब छोड़ दो लेकिन, ये सब बकचोदी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ। Just
think of it like we have to delete some elements. Now, what are that some elements? Basically, think of it. Think of this question as deleting some elements from the array. Yes, fucking some elements. So, suppose this is first three elements, and what are the options that I can delete? I can delete this one, and I can delete this. I can never be able to delete two in this window, isn't it? So nice. So I can delete either six to the right. If I delete six, I will get six, and then I will shift my window. Whichever the minimum element is, will be always no. ये तो हम पे करता है ना डिपेंड. इसके लिए कुछ दिमाग में तो नहीं आ रहा दोस्तों. 5200 तो नहीं रहे, ज्यादा चाहिए कुछ. देखते हैं चलो. प्रोबेबिलिटी तो कर ले तब तक. जो कर सकते हो वो कर लो. बाप रे बाप.
Wrong answer.
लाइक रिमाइंडर विल बी जब मैं एक्सचेंज करूंगा तो इतने बॉटल्स तो मेरे पास फ्री बचेंगे, और ये these are the न्यू बॉटल्स आई विल गेट। ठीक है, तो न्यू बॉटल्स प्लस रिमेनिंग बॉटल्स, सही है। आंसर है, मैंने पहले जितना था मेरा उतना डायल कर दिया था, उतने बैटर मेरे पास थी। एंड आंसर प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा नम बॉटल्स जो नए मिले हैं मेरे को। टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो रहा है? 9 and 3 पे देखते हैं। We have given 9 bottles. Now we will add it. Now what will happen? Remainder will be 0। 0 आएगा रिमाइंडर, 3 से करूंगा तो। And number bottle will be, so there will be 3। 3 bottle तेरे पास है अभी। Number of bottles 3 है, 3 plus remainder is 0। 3 प्लस और गया तो तेरे पास 3 बॉटल्स अभी है। अब रिमाइंडर आएगा 3 के साथ जब करेगा नम बॉटल्स इतना में एक्सचेंज, तो 3 डिवाइड बाय 3 will be, remainder will be 1। 1 by remainder will be 0 and number of bottle will be 1 and number of bottles plus 0 आएगा और वो greater than 1 आएगा। एक्सचेंज जब भी छोटा हो जाए। दोस्तों इजी सवाल नहीं हो रहे हैं और हम बकचोदी कर रहे हैं इधर बैठ के। ये सब कर चुका हूँ दोस्तों, आपको अगर लग रहा होगा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला, ये तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। गेट ऑल यूनिक परम्यूटेशन, एक तो इसका वो है ना, नेक्स्ट परम्यूटेशन करते रहो, तो बकचोदी करते रहो, पर you will not do that bro। What we are supposed to do?
हक दिया। 133 बाद फिर एक दो बार आ रहा है क्या? यूनिक बोला है इसने कुछ कुछ ऑप्शन। लिस्टिंग तो वेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन से अच्छा सेट ले लेता हूँ। सेट ले लेता हूँ। अनऑर्डर्ड सेट ले लेता हूँ। अनऑर्डर्ड सेट में नहीं, नहीं बैठता शायद, सेट नहीं बैठता है। तो आंसर अब इंसर्ट होगा यहाँ पे। वेक्टर ऑफ इंड विक आंसर विल बी, ये क्या होगा, st डॉट बिगिन और आंसर डॉट बिगिन। नहीं दोस्तों, ऐसे कुछ था इसका कोड। क्या टॉपिक बैक ट्रैकिंग रिकर्शन, वो तो मैं लिख चुका हूँ। और सुबह सुबह दिक्कत क्या है पता है? नींद आती है। बहुत बड़ी बात है, नींद कंट्रोल करना आसान तो नहीं है। ये वाला सवाल मेरे को लग रहा है कि मेरे को अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, अब करेंगे गेसिंग गेम। इसका व्हाट विल बी द टॉपिक फॉर दिस इन दोनों के लिए भी डायनामिक प्रोग्रामिंग होगा। मैथ्स तो होगा लास्ट वाले पे। अभी इसको करते हैं अपन जाके स्टॉप। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, स्टॉप, लीव। ले, दैट्स fucking I am talking about. That's fucking. I In my case I am talking in reverse direction. Like I will be the starting point and J will be the what is remaining element. I I know my mind is working in the same direction, but I was unable to implement this. कॉम्बिनेटोरिक्स बोले तो दिमाग से मस्ती। चलो दोस्तों, अभी जाता हूँ, कॉलेज वॉलेज करूंगा जाके।